Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Shree Ram teaching you accountancy of class 11. स्टूडेंट अभी तक हमने क्लास 11 के जो वीडियोस देखे उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है जो कि हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. So now in this very session we are going to discuss the further topic of this very chapter. So let's start today's session. Today the very first topic that we are going to discuss is role of accounting in business. So far we have seen the definition, the characteristics, process, function and advantages of accounting. Now what is the role of accounting in business? That is the topic. So accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transaction of business in a useful manner. This is the definition of accounting that we have seen so far, that accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating and analyzing the financial information. So on this basis, on the following points, we are going to discuss the role of accounting in business. That is, following points highlight the role of accounting in the field of business. The very first is, that is maintenance of systematic records. Accounting basically maintains the records of our financial transactions. So that is the systematic maintenance of the records. The primary role of accounting is to maintain systematic records of financial transactions in order to ascertain the net profit or loss for the accounting period and financial position of the businesses as on a particular date. When we maintain the record, then at the end of the financial year, any businessman come to know that what is his financial position, that is, and what profit or loss he incurred, and that only he can ascertain when he is maintaining the proper systematic records of our business. So income statement like profit and loss account is prepared, and the balance sheet that shows the financial position of our organization. So the first role of accounting is, that is, maintenance of systematic records. Next is assistance to management, that we have seen in the characteristics function of the accounting, that it assists the management. How? Then accounting provides assistance to management by providing financial information for its effective functioning and taking important decisions. Management can take decisions by the past performances as well. So when the management having the systematic records, management can take better decisions which helps an organization for the improvement. Another is, that is, the facilitates comparative study. It also, when we maintain the records, we can have the compare, we can make the comparison. So comparison, it may be internal comparison or external comparison. For internal is a management can compare the function of within the enterprises from the past year, or from the outsiders, that how the other enterprises are operating of the business of same nature. So that is the facilitates comparative study. Here it is, a systematic record of financial transactions enables a businessman to compare one year's result with those of other years and locate significant reasons leading to change if any. Management can also take the decisions which can help the business. So if management thinks that there is a need of change of any decision, then management can take decisions only then when they are having the proper records of their accounting. Another is evidence in court. Accounting records are often accepted by courts as good evidence. The recording of the transactions which our business follow, that followed by the principles and the guidelines of the accounting procedure. So the accounting records are also used as evidence in the court of law whenever needed or required. Another is, that is,
others that you can say as an extra miscellaneous, like proper accounting records remove the difficulty to remember business transactions. That any businessman cannot remember the transactions of every day, or a man can remember the transactions of a single day, 2 day or 3 days, say, but a man is unable to remember all the transactions throughout the accounting period. So that's why there is a need of accounting, which helps the management, which helps the businessman to remove the difficulty to remember the transactions. Another is facilitates raising loans. Sometimes bank sees the transaction whether the company is doing good or not. So on the analysis of the financial performance of any organization, banks facilitates the loan to the organization. So it also facilitates in raising loans. Another is facilitates settlement of tax liabilities. Likewise, tax liabilities like GST return, whenever a company, for take an example that a company has to return a file of income tax or GST or the excise duties. So by having the proper record, a company can settle the tax liabilities as well. Now the next topic that we are going to discuss is the limitations of accounting. So far we have seen the definition, the process and so on thing. Now the next topic that we are going to discuss is the limitations of accounting. It means you can say that limitations in the sense of the drawbacks, the negatives. So far we have seen the positive sides of the accounting. Now we have to just see the drawbacks, or you can say the negative aspects of the accounting. So let's see. The very first is accounting is not fully exact. जो accounting होता है वो fully exact नहीं होता है. कैसे? Let's see. Accounting is not fully exact in spite of the facts that most transactions are recorded on the basis of evidence. Yet some estimates are also made for ascertaining profit or loss. जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो एविडेंस के बेसिस पे होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ ऐसे हम एजम्पशंस कर लेते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन करने में मदद करता है. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट. कोई भी असेट जो बिजनेस का होता है उसके जो यूजफुल लाइफ होते हैं, ड्यूरेशन होते हैं, उसके हम एक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि ये फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से 5 इयर्स 10 इयर्स तक हमारे लिए यूजफुल होगा. तो दैट बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस. Providing for doubtful debts. Doubtful debt means a part of debts that we are not going to recover. That is termed as a doubtful debts. हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितने हमारे पास डेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास 1 लाख का डेटर्स है और वो मान करके चलता है कि उसमें से 15,000 नहीं मिलेगा. So that will be provision for bad debts. वो मान करके चलता है. That is the provision for providing doubtful debts. Net realizable value of closing stock etc. एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी जो रिलाइजेबल वैल्यू होती है उसमें भी वो क्या हो सकते हैं, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं जो कंपनी एज्यूम करके चलता है. सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट. इट इज नॉट ऑलवेज द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशंस गिवन बाय द अकाउंटिंग. नेक्स्ट दैट इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन. Unrealistic information means accounting information may not be realistic since accounting statements are prepared following the accounting concepts and conventions. जो accounting के जो हम records करते हैं, accounting information जो हम find out करते हैं, वो कुछ एक certain concepts, principles को follow करता है. For example, under going concern concept के अंतर्गत जो एक हमारा futuristic होता है, it is taken that business will continue for a foreseeable future. Accordingly, assets are recorded at cost and depreciated over their useful life. The assets may not be actually realizable at book value. कोई भी assets होता है उसकी एक हम useful life expectancy कर लेते हैं और उसका एक certain value हम determine करते हैं कि after certain period of time वो assets एक particular amount हमको realize करेगा. But ऐसा हो सकता है कि वो जो वैल्यू हमने अभी एक्सपेक्ट कर रखा है वो उतना वैल्यू नहीं हमको मिल पाया. सो दैट्स व्हाई इट इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशंस आर गिवन बाय द अकाउंटिंग. नेक्स्ट इज दैट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, सो फार वी हैव सीन दैट अकाउंटिंग बेसिकली रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोज हु आर हैविंग द मॉनेटरी वैल्यू. सो इट अवॉइड्स द क्वालिटेटिव measures and the elements. Let's see. Accounting is confined to monetary matters only.
जो अकाउंटिंग है उसमें केवल हम मनी मैटर्स को ही क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर्ड। हम अपने अकाउंटिंग में केवल मॉनेटरी वैल्यू को ही रिकॉर्ड करते हैं। जो क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, फॉर एग्जांपल द मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ आवर मैनेजमेंट, द स्टाफ हाउ गुड दे आर इन देयर वर्क एंड द रिलेशंस, द पब्लिक रिलेशनशिप, ये सब कुछ ऐसी बात है जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है, जो बिजनेस को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, बट ये हम मेजर नहीं करते हैं, ये हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो दिस इज द अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ओनली इट रिकॉर्ड्स द मॉनेटरी मैटर्स। Another is that is accounting may lead to window dressing. Window dressing means, here it is, the term window dressing means manipulation of accounts in a way so as to conceal vital facts and present the financial statements to show a better position than what it actually is. Sometimes हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होता है उसको साइड करके हम एक गलत डेटा भी कभी कभी क्रिएट कर लेते हैं। इट मीन्स जो हमारे यूजर्स होते हैं, फॉर ए टाइम बिंग एक्सटर्नल यूजर्स, उनको कन्विंस करने के लिए कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, हम थोड़ा सा एक गलत डेटा भी क्रिएट कर लेते हैं। सो दैट इज विंडो ड्रेसिंग। सो इन दिस सिचुएशन, इनकम स्टेटमेंट दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, that is profit and loss account, fails to provide a true and fair view of the result of operations, and the balance sheet fails to provide a true and fair view of the financial position of the enterprise. जो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, वो भी एक गलत डेटा हमें मिल जाता है, जिस कारण से जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको लगता है कि हमारी जो भी कंपनी है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छा है, और जो उसका जो ग्रोथ है वो क्या है, एक पॉजिटिव ग्रोथ है। सो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे अकाउंटिंग का। नाउ नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग से डिराइव करते हैं वो किसके लिए बेनिफिशियरी होते हैं, और वो मैनेजमेंट में क्या क्या हमारे लिए पॉजिटिव लेकर के आता है। सो लेट्स सी, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डेटा, रिकॉर्ड्स इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, classifies and summarizes it to produce financial information that is communicated to its user. So far we have seen in the accounting that accounting is a process to record, classify, summarize and to just communicate the informations to the users. So these informations are useful for the businesses as well. Accounting begins with the identification of transaction of the financial nature, जो कि हमने शुरू से देखा है कि जो मेरा अकाउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो खत्म होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन से, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज वेल. Each step in the process of accounting generates information. Generation of information is not an end in itself, it is a way to facilitate communication of information to users of accounting informations. केवल यहीं तक हमारा अकाउंटिंग समाप्त नहीं होता है, उसके बाद जो हमें informations मिला, whatever the informations a company gathered, it must be communicated to the users, जो कि उससे benefit ले सकते हैं. Now the types of accounting information, कौन कौन से ऐसे informations हैं जो कि एक फायदा देता है ऑर्गेनाइजेशन को. That is, accounting information refers to the financial statements generated through the process of bookkeeping, use of which helps the users to arrive at decisions. The financial statements so generated are the income statement, that is profit and loss account, the position statement, that is balance sheet. The information made available by these statements can be categorized into the following. जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं वो क्या है, बेसिकली हम उसे दो भाग में बांट लेते हैं, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन. इनकम स्टेटमेंट दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज द बैलेंस शीट, जो हमें ये बताता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. सो इट इज कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ग्रुप, दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, इंफॉर्मेशन relating to profit or surplus, second information relating to financial position and information about cash flow. ये बेसिकली तीन इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है उसको अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे. Let us now discuss these in details. Number first, information relating to profit or surplus. जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किए, उसके एंड में
हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। The income statement makes available the accounting information about the profit earned or loss incurred as a result of business operations or otherwise during an accounting period। जो भी हमने वर्क किया एक अकाउंटिंग पीरियड में, उससे हमें क्या फायदा हुआ या हमें नुकसान हुआ, ये जानते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। A firm prepares trading account, a part of the profit and loss account। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है, देन फर्दर वो हम ट्रांसफर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, देन हम ये फाइंड आउट करते हैं वेदर हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या हमें नेट लॉस हुआ है। Which provides information about gross profit or gross loss, and profit and loss account provides information about the net profit or net loss, जो कि हमें ये बताता है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, हमारा इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बैलेंस शीट। क्या हमारे पास असेट्स हैं, कितने हमारे पास लायबिलिटीज हैं, ये सारी जानकारी हमें मिलता है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन से, जो कि होता है हमारा बैलेंस शीट। सो द पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज द बैलेंस शीट मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटाइटी। जो भी हमारा बैलेंस शीट होता है वो बताता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कि वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या बैलेंस है, क्या उसका पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या उसके पास असेट्स हैं, कितने उसके पास लायबिलिटीज हैं, कैपिटल क्या है, ऑल दिस थिंग्स। द पोजीशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी, अमाउंट्स रिसीवेबल एंड द कैश एंड बैंक बैलेंस हेल्ड बाय इट, कितने कैश बैलेंस अवेलेबल हैं, कितने बैंक बैलेंस अवेलेबल है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है हमारे बैलेंस शीट से। These are represented in the liabilities by the amounts owned by the entity towards loans, creditors and amounts payable and capital। ये तो हमारे असेट्स के थे। असेट्स में हमें बेसिकली कैश का पता चल गया, बैंक बैलेंस पता चल गया, हमारे पास कौन कौन से असेट्स हैं ये सब पता चल जाता है। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी साइड में ये पता चल जाता है कि हमारे पास कितने एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या है, हमारे बैंक लोन्स अगर हैं तो उसका क्या अमाउंट है, हमें कोई बिल पे करना है तो वो कितने का पे करना है, जो हमारा इंटरनल लायबिलिटी है जो कि एक ओनर का कैपिटल होता है वो कितना है, ये सारा जानकारी हमें मिलता है हमारे बैलेंस शीट से, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। सो ये भी हमें एक इंफॉर्मेशन वहाँ से गैदर होता है। एंड द थर्ड इज दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। द कैश फ्लो, कैश मीन्स नगद, रुपया जिसे हम बोलते हैं, एंड फ्लो मीन्स you can say as a bahaw, flow means the bahaw। so it is of two type, inflow as well as outflow। जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं, when we make a payment to anyone, it means the outflow of the money, it means हमारे पास से वो पैसा जाएगा। on the other hand, when an organization receives money from someone, it means there is a inflow of cash in our business। so ये बेसिकली हमारा ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें ये देता है कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग और क्या हमारे पास कैश का पोजीशन है, जिससे हमको ये पता चले कि हम पेमेंट्स वगैरह सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमें किसको कितना पेमेंट करना है। या बेसिकली नाउ लेट्स सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें बोथ बताता है, बोथ क्या क्या, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक निश्चित समय के लिए। इट इज ऑफ इमेंस यूज एज मेनी डिसीजंस सच एज पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एटसेट्रा आर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। ये फर्म को ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके पास कितने कैश अवेलेबल है। सो दैट्स वाई अगर उसको किसी का पेमेंट करना है, किसी क्रेडिटर्स का, वो कर सकता है, वो डिसीजन लेगा कि हमारे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है। सो दैट्स वाई अ फर्म कैन मेक अ पेमेंट टू एनी क्रेडिटर्स, और फ्रॉम वेयर अ फर्म हैज टू रेज फंड। अगर कैश शॉर्टेज है तो वो कैसे फंड को रेज करेगा, कैपिटल कितने अवेलेबल है, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होता है कैश फ्लो के स्टेटमेंट से। सो इट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। नाउ द नेक्स्ट इज द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन से यूजर्स हैं? सो फार हमने देखते आए हैं कि यूजर्स जो कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, वो कौन कौन से हैं। सो बेसिकली ये दो होंगे, दैट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। That's all for today, student. In next video we are going to discuss the further about the users, that is the users of accounting information. Till then, have a good day and don't forget to subscribe our
YouTube channel St. Michael's Academy so you get the latest videos. Thank you.